अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत के साथ होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेटा के ऊपर। व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या चीज़ होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जिस भाई ने समझना है कि डेटा क्या है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं एंड तक। और अगर जिस भाई को पता है ऑलरेडी तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो लेटेस्ट आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा की डेफिनेशन। डेटा क्या है। डेटा जो है एक इन कंप्यूटिंग डेटा जो है इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन होती है डेट हैज बीन ट्रांसलेटेड into a form that is efficient for movement or processing. In computing, data information has been translated into a form that is efficient for movement or processing related to today's computer and transmission media. Data is information converted into binary digital form. Binary form 0 1 इसे कहते हैं binary form. It is acceptable for data to be used as singular subject और plural subject. अब हम जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं बाइनरी फॉर्म में होते हैं 0 और 1 फॉर्म में। Raw data is a term used to describe data in its most basic digital format. The concept of data in the context of computing has its root in the work of Claude Shannon, an American mathematician known as the father of information theory. फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी कौन है? वो है मैथमेटिशियन। तो आगे जानते आगे ही यूज हेयर्ड इन बाइनरी digital concept based on apply to value Boolean logic to electronic circuit. Binary digit form underline the CPU, semiconductor memories, and disk drive, as well as many of the peripheral devices common in computing today early. Computer input for both control and data took the form of punch card followed by magnetic tape and the hard disk.